Hello, learners. Welcome back in the session of short video based learning session for language of French. Today we will do the class in bilingual format. Bilingual meant for we are going to learn the conjugation of verb in both English and Hindi so that everyone will be able to understand. जब हम बात कर रहे हैं फ्रेंच में थर्ड ग्रुप वर्ब का, तो मैं आपको बताऊं थर्ड ग्रुप वर्ब्स आर द मोस्ट इरेगुलर ग्रुप ऑफ वर्ब. Irregular meant for their conjugation and their connection with the subject pronouns are different in nature. If I'm talking about third group verbs are the verbs which are ending with IRE, IR, OIR or RE. These are the third group verbs mainly known for the third group verbs. So let us talk about third group verb जिनका हम कॉन्जुगेशन सीखेंगे. एक इम्पॉर्टेंट वर्ब है जिसको हम फैग कहते हैं. फैग इज़ टू डू, राइट. और जब हम फैग की बात कर रहे हैं तो ये इसका मीनिंग होता है टू डू या टू मेक. कई बार आप इसको वेदर कंडीशंस में फैग को आप एक वोकैब के तौर पर देखते हैं. सब्जेक्ट प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो कनेक्शन है स्टेम के साथ, आर ई हटाने के बाद FAI के बाद आप जैसा अदर वर्ब्स में देखते हैं फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट पर्सन ज के साथ IS, ISSS, ज के साथ S, त्यू के साथ L, S, इल L, ओ के साथ TT एंड देन नू के साथ ONS, ISONS एंड फर्दर ITES, ONT जोड़ेंगे. मेरा जो कहने का लिटिल मीनिंग है, आई एम ट्राइंग टू से दैट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब फैग, देयर विल बी कॉन्जुगेशन with the detachment of verbs normal conjugation in terms of its regular stem FAIR, detach RE and then FAIE, add S with j, S with tu, il L, IT O IT, that is only T, and then further ISONS for nu, ITES for woo, and for won, il, ONT and ONT. So this is going to be the conjugation. Now कैसे हम इसे पढ़ेंगे? फर्स्ट पर्सन के लिए ज फे, that meant for I do, त्यू फे you do, il फे he does, L फे she does, on फे one does, further nu faisons, we do, vous faites, you do, il font, they do, elles font, they do, the feminine. So this is the literal meaning, the translation. Use for fag. Fag is to be used in the activity of weather, sports, task and other relative casualties words. एग्जाम्पल थोड़ा देख सकते हैं. फैग कॉन्जुगेटेड प्लस इन्फिनेटिव टू हैव समथिंग डन फॉर वन सेल्फ. यानी जब फैग को हम कॉन्जुगेट करते हैं वो उसके साथ उसका इन्फिनेटिव फॉर्म होता है, तो वो डू के काम में मीनिंग में आता है, जो एज इट इज़ FAIR फैग के तौर पर रहता है. रिलेटेड वर्ब अगर मैं बोलूँ तो इसके जैसा एक रिलेटिव वर्ब है फ्रेंच में, डी फैग, दैट इज़ टू डिमोलिश, टू डिस्ट्रक्ट. That is again destruction is also verb, right? By the way, this is also the action oriented word. Let us move further. Expressions with fag क्या आते हैं उसको हम थोड़ा समझते हैं. Fag attention, to pay attention. Fag connaissance, to get acquainted. Fag is here not being conjugated, rather conjugated with the other verbs, so it is simply a word here. Fagla mogal, that is to scold. Fagla q, to wait in. Cn fag, to worry, right? Now अभी हम फर्दर इस पर दूसरा जो हमारा कंटेंट है वर्ब का, उस पर बात करते हैं. ये वर्ब है थर्ड ग्रुप वर्ब है OIR. वूलवाक, टू विश, वूलो. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्मेट हम बात कर रहे हैं इसका, ये थोड़ा अलग है.
सो इसका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, प्लीज़ समझिए, हिंट दे रहा हूँ मैं। तो इसका सीधा कॉन्जुगेशन नहीं बनेगा IR OIR हटाने के बाद VOUL के साथ, ये बिल्कुल अलग बन रहा है। ज के साथ ज व, दैट इज़ आई वॉन्ट और आई विशेस, आई विश। त्यू व यानी यू वॉन्ट और यू विशेस। इल व, एल व, ओ व, वन वॉन्ट्स ओ व के लिए, एल व के लिए शी वॉन्ट्स और शी विशेस, इल व के लिए ही वॉन्ट्स इंग्लिश में। सो अगर हम इसका प्लूरल की बात करें, वी टॉक अबाउट प्लूरल एस्पेक्ट ऑफ द सेम, नूज नू वूलो, नू वूलो, वी वॉन्ट, वी मैन फॉर द प्लूरल पर्सन, followed by woo woole, you want, il wal, they want, the masculine, el wal, so they, the masculinity's opposite femininity, that is the female, यानी वो पुरुष चाहते हैं वो महिलाएं चाहती हैं इन हिंदी। सो आई विल रीड दिस थर्ड ग्रुप वर्ब, वुलवा टू विश टू और टू वांट, जब व, त्यू व, इल व, एल व, ओ व, नू वूलो, वू वूले, इल वल, एल वल। So this is going to be interesting one. Let us proceed with the next verb, that is called puvag. This is again the I'm sorry, this is the verb into the context of to be able to, that is potentiality of a person, capability, right? So if I am capable to teach you or doing something in the future course of action, conjugation will remain same, likewise vulvag. So if you are done with the vulvag, you will be able to do for the puvag, that is to be able to, that is again to be able to meant for futuristic. I am going to, or I can be, I can be able to teach you once I have done PhD, huh? So this may be japa acute kind of thing. I mean, I don't want to discuss this sentence because I could not be able to write here. So further I shall be able to give this meaning. Japa, that meant for I can or I do, I may be able to. Tupa, ilpa, elpa, opa. Similar to the vulvag, to wish to, nu puvo, wu puve, ilpav, elpav. Japa, I can or I am able to. Tupa, you can or you are able to. Ilpa, he can or he is able to. Elpa, she can or she is able to. Opa is one is able to. And further puvo, that is nu puvo, we are able to. Wu puve, you can be able to. Ilpav, they are able to. And elpav, they are, that meant for the female and earlier the male. Moving further, there's another important verb called fond. The conjugation for this third group verb will be based upon re ending and conjugated like it will be the same formula that we have discussed. ज के साथ s, त्यू के साथ s और उसके बाद इल के साथ, एल के साथ, ओ के साथ कुछ भी नहीं आएगा। नू के साथ ओ एन एस और वू के साथ ई जेड, इल्स के साथ ई एन टी, एल के साथ ई एन टी। और इसके साथ आप स्टेम को डिटैच करेंगे, फॉन्ग आर ई हटाएंगे और इसके साथ सारी चीज़ें प्लेस करेंगे एंड देन फार्मूला विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। जब फॉन्ग आई टेक, त्यू फॉन्ग, फॉन्ग इज टू टेक, टेक मैन फॉर लेना, किसी चीज़ को ग्रहण करना, काइंड ऑफ थिंग। जब फॉन्ग आई टेक, त्यू फॉन्ग यू टेक, इल फॉन्ग ही टेक्स, एल फॉन्ग शी टेक्स, ओ फॉन्ग वन कैन टेक, नू फन्नो, दिस विल बी चेंज, नू फन्नो we take, woo fanne, you take, el fen, they take, el fen, they take the females. So this is what the conjugation of the verb to take. I have already discussed in the classroom, so nothing much to be talked about. Fun to take, afghan to learn, confon to understand, to be able to comprehend with. Samapand, samapon, to be mistaken or to be taken by mistake, right?
Surprendre, to surprise. So the conjugation for all these verbs will be like fond. If I could talk about upon, ja upon, tu upon, il upon, el upon, nu upon, no, who upon, ne, il upon, el upon, ja come upon, tu come upon, il come upon, like that, right? So I'm not going to discuss with these verbs. Further, I will go for two OIR ending verbs, which will be the last of this particular video session. Khwag is to believe. Khwag is to believe. COIRE, and wag is to look after, to look at, right? So this will be the matter of our discussion. Jakhwa, like that. Similarly, it will be like similar fong. IS इल एल ओ में कुछ भी नहीं आएगा. ONS EZENT. सो जख्वा, त्यूख्वा, इलख्वा, एलख्वा, ओख्वा, नू ख्वयों, वू ख्वये, इलख्वा, एलख्वा. So this is what khwag and wag, the verbs conjugation would be like that. Wag will be javwa, tuwa, ilwa, elwa, nu, ilwa, elwa, owa, nu, wayo, wu, waye, ilwan, elwal. That meant for I see or I watch, you see, he, she's, she, she's, one, she's, we, she's, you meant for आप देखते हैं, काइंड ऑफ थिंग. इल वयो, दे सी मैस्कुलिन. एल वल, दे सी the female. So conjugation would be a bit different, and for khawag the same, and the wag is same. Moving further, paktik and soktik, it will be remain same like the third group verbs other. S for ja, S for tu, il, el, nu, il, el, o, nothing, nu, ons, wu, ez, and then ils or else के लिए tent. So this will be paktig, jab pak, tu pak, il pak, el pak, nu pak, तो wu pak, te il pak, el pak. Similarly, ja sok, tu sok, il sok, el sok, nu sok, तो wu sok, te, right? Wu sokte, il sok, el sok. So this will be similar. Now the very interesting verb that is called vanig, ENIR verbs. Vanig is a verb which is a bit different, that is ending with the IR. Sometimes it looks like a second group verb, but it is not a second group verb. Most common ENIR verb is vanig. Verb is translated to come. Conjugation देख लेते हैं कैसे होता है. ज विया एस विद ज, त्यू के साथ भी एस, इल के साथ टी, और एल के साथ टी, ओ के साथ टी, उसके बाद ONS EZ ENT. आप देखेंगे जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की या पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो वो कॉन्जुगेशन अलग होता है. इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा. जब यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं हम, जब यहाँ, त्यू यहाँ, इल यहाँ, एल, ये पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं. आई बेग योर पार्डन. पास्ट पार्टिसिपल मतलब आई केम, आई कम, आई केम, you come. That meant for action have been already taken or been to be taken. So il via, he comes, el via, she comes, o via, one comes, nu veno, we comes, vu vane, il vien, they come, el vien. So they come as a female or as a male, as we have discussed. So this is the way we had to conjugate our verbs. There are more verbs to be talked about, like UIRE verb, conjugate. Similarly, that will be COUND. U will be detached, IS will be added, IRE will be detached, and IIS, IT, ONS, EZ, ENT will be added. So it will be ja conduit, tu conduit, I drive, you drive, il conduit, he drives, el conduit, she drives, o conduit, one drives, nu conduisons, vous conduisez, il conduisons, elle conduisons. So this is what the verbs and their group of conjugation. There are many other verbs which are similar.
Similar to the other third group verbs, jadog, dogmeek is to sleep. Jadog, tidog, ildog, eldog, odog, nu dogmo, wu dogme, excuse me, il dogmo, el dogmo. The wag like was wag, deos, tu deos, il doa, el doa, on doa, nu devon, wu deve, il devon, el devon. Suvgig is to surprise or to follow. Sui, just sui, tu sui, il sui, elle sui, on sui, nous suivons. Savag is different. Suivig is different. Suivons, elle suivons. So I am sure after this particular discussion, there are simple other verbs that we have already discussed with. I hope you have been liking this type of content on YouTube. If you are playing your interest, if you are playing your interest in this area, you'll be able to benefit it from the same. As if for now, I must conclude the session and tell you thank you. Shall meet you in the other video form. Look after the same and look after the description box. Good night.